The Pilots Association has strongly reacted to the preliminary probe report. The Airlines Pilots Association of India has criticized the investigation, saying that it is being steered with a presumption of pilot guilt. The association has alleged that Aircraft Accident Investigation Bureau shared the preliminary report with the media while keeping pilots in the dark, raising concerns about transparency. Calling the situation deeply troubling, the association has also requested aircraft probe body to include them as observers in the ongoing probe. And we'll now take a look at how the Civil Aviation Minister and other leaders have responded to the Aviation Crash Watchdog's preliminary report. A very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. AIB एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है, उनके हिसाब से वो काम करते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि जो संवाद हुआ है वो भी सामने आया है, लेकिन उस संवाद से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आया है, मुझे लगता है कि और थोड़ा समय देना चाहिए, तो हम फाइनल उसमें एक्चुअली क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, रीज़न क्या है, तो उस पर आ सकते हैं फाइनल रिपोर्ट के बाद। There is a fact which has come into emergence. The fact has been reported that there has been an engine flame out. Engine flame out means engine shut out. Now, if this has happened, question I cannot answer. Let the investigators find out. Let the international agencies have to find out why did such an action happen. I have no one to, why did the engine flame out at first effort? If this had happened at 10,000, 15,000, 4,000, 5,000 feet, 20,000 feet, that action would have immediately restored the engine. This is for the experts to say, this is for the investigators to say. A, fact is, engine has flamed out. That means engine has shut. B, captains under this report have made an instant effort to relight the engines. That means to restart the engines. They could not succeed. And fourth is the question which will arise everywhere now: why, after rotation, why after reaching a speed of 160 knots, Indian engine lost power? Because when the aircraft crashed, the power indicated in both the engines was at idle, which is zero power virtually. And well, my colleague Ankit Kumar explains the findings of the preliminary report in detail. Take a look. The first 15-page prelim report of Ahmedabad-London Air India 171 aircraft accident is out now. The entire focus of the prelim report is on this part of the aircraft cockpit. You know, 787 Dreamliner is considered one of the most advanced, most modern aircrafts. What has been indicated in the prelim report is that for some reason, these two switches, they were supposed to be, the fuel control switches, they were supposed to be in the run position. Instead, moments after the takeoff, they were found at the cutoff position. Now there are two switches. The left one controls the left engine, the right one controls the right engine. For some reason, while airborne, these switches, which were supposed to be on this run position upwards, they were turned vertically down towards the cutoff position. Now this is not simple. You know, there are two safety valves here to prevent accidental switching. Also, what is important is that if a manual intervention, if pilots want to change this position while they are airborne, they need to pull these switches vertically up, and they can turn it down or up. So accidental switching in this case is being ruled out. Although this has not been written in as many words, it will take
probably months and maybe even years of investigation to finally conclude what may have happened, what exactly has happened. But what we are given to understand is that there was no electronic or mechanical failure. What does that mean? It means that there has to be some kind of human intervention, whether it was intentional or unintentional, to be able to turn not one switch, but two switches. What these switches do? They control the flow of fuel to the engines. Now what is happening is, while your aircraft is airborne, something or somebody actually managed to pull these switches first vertically up and then down. Now the recording suggests that one of the pilots asked their co-pilot, have you done this? And the other pilot is heard saying that he did not. Now what exactly caused? Because remember, in case there was an inherent problem, the guidelines are such that the investigators are supposed to recommend the operators of different airlines who use GE engines, who use this particular Boeing aircraft, to make some changes. In this case, no such guidelines have been issued, which means that there is not enough evidence of an inherent mechanical problem. Obviously, there's no electronic glitches that have been observed. So what caused these two switches to be able to switch off from run position to cutoff position is going to be the key point, is going to be the line of investigation that the officials will be pursuing for the next few months or probably years. India Today spoke to Captain Umang Jani, HOD of Aviation Department of Western India Institute of Aeronautics at Indus University in Ahmedabad, who explains minute-to-minute details of preliminary probe report of AAIB from the cockpit of the Boeing 737-200 aircraft. आपने इसके पहले भी एक बार जब हम मिले थे, आपने समझाया था कि दो इंजन के दो इनपुट होते हैं और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जो स्पीड ब्रेक हो या चाहे थ्रस्ट हो या जो भी कट ऑफ के जो भी हैं, सारी दो इंजन के मुताबिक दो उसके पूरे पावर राइट्स हैं. क्या किसी प्लेन में जिस प्रकार से इसमें दो थ्रस्ट के इसके अंदर पावर है, अगर आप हमें समझा भी पाएं अगर टेक्निकली, तो वो भी आप समझाइए. और क्या दो इंजन के साथ दो फ्यूल टैंक अलग अलग होती हैं? क्योंकि फ्यूल नहीं मिलने की बात है, तो दोनों फ्यूल टैंक क्या अलग अलग होती है? हम फ्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टैंक से हमें फ्यूल लेना है. इसमें फ्यूल सिलेक्टर वाल्व भी होता है. देखिए, उसमें ऐसा है कि दोनों इंजन इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं. हम अभी जिस विमान की कॉकपिट में, ये है विमान है बोइंग 737-200, ये पुराना एक मॉडल है, उसका विमान है. उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो इंजन लगे हुए हैं और ये जो पूरा यूनिट है इसे हम थ्रॉटल क्वाड्रेंट कहते हैं. तो ये दोनों इंजन होते हैं, अगर आप उसको दोनों को एक साथ ऑपरेट करना चाहें तो वो दो एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं. अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना चाहें तो आप इंडिपेंडेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं. तो उसकी हर एक जो स्विचेस होती है, जैसे कि थ्रस्ट रिवर्सर की जो स्विच है वो आप एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं और उसका एक इंडिपेंडेंट भी आप ऑपरेट कर सकते हैं. उसका जो फ्यूल कट ऑफ है वो भी एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं और उसके इंडिपेंडेंट जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं. यानी पूरा जो दो इंजन होते हैं वो जनरली एक दूसरे के में मीन्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं. अच्छा, फ्यूल कट ऑफ की बात आ रही है, क्या जो 787-200 ड्रीम लाइनर है उसमें भी क्या फ्यूल कट ऑफ का जो भी सिस्टम है वो इसी तरह से होता है जिस तरह से यहाँ पे फिलहाल हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है? फ्यूल कट ऑफ दो तरीके से होता है. एक तो मैन्युअली होता है जो कॉकपिट से किया जाता है, और दूसरा जो होता है कि इंजन के साथ एक उसकी जो इंजन को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली होती है वो इंजन को कमांड देकर फ्यूल कट ऑफ कर सकती है. तो ये अंदर से क्या लगता है कि कट ऑफ किया गया हो या बाहर से? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि प्लेन जब उड़ान भरने वाला होता है तो एक चेकलिस्ट होता है, उसमें भी ये सारी चीजें चेक करनी रहती है. जी बिल्कुल, चेकलिस्ट होता है. और अगर सबसे पहले तो फ्यूल कट ऑफ वाल चेकलिस्ट के हिसाब से ही पूरे सारे फ्लाइंग ऑपरेशन होते हैं. अगर फ्यूल ये जो वाल होता है उसका ऑपरेशन भी चेकलिस्ट का हिस्सा ही होता है. अगर पहले से फ्यूल कट ऑफ वाल ये सपोज ऑफ पोजीशन में है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता. अच्छा, दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ होना, इस बात में आपको कितना विश्वास? मैंने जैसे कि आपको बताया, दोनों इंजन इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने हिसाब से मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. और
दोनों इंडिपेंडेंट जब वर्क करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी कंट्रोल में आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों इंजन जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं जी। वैसे कोई संभावना नहीं होती कि दोनों जो हैं वो एक साथ इंजन फेल हो जाए।